Now we will discuss September month's polity of the Vision magazine. Okay. First topic is related to polity and governance. Nari Shakti Vandan Constitutional 106th Amendment Act 2023. ठीक है. So this has been passed by Parliament as a 106th Amendment Act, and the articles which has been amended like 239 AA, which is related to the Union Territory, then 330A, which is related to 1/3 seat women in House of People, ठीक है, in Lok Sabha. Then 332A, this is talk about 1/3 reservation of the women in States Assembly. Okay. Then 334A, this talks about the enactment of this act will have some kind of limitations like sunset clause. This thing will be available for 15 years only. Okay. Then the representation 1/3 reservation of the women will not be in Rajya Sabha and the State Council, even though some councils like wait a bit, Geeta Mukherjee Committee 1996 says there should be representation of women in Rajya Sabha and State Council also. Okay. Next thing is the information like in Parliament there is 14% women representation, and in State Assemblies there is 8% only, and according to the Interparliamentary Union, fewer percentage of women in the lower house than its neighbors. ठीक है. So in Sri Lanka and Pakistan, Nepal, Bangladesh, they have more representation of women than in India. Okay. Next thing is need for women's reservation. तो ये we have seen कि 14% जो representation है सिर्फ इतना कम 8% in the assemblies, and we have the lowest percentage of the women representation in our neighbor countries also. Then in World Economic Forum we have Global Gender Gap Report. Our position is 127 out of 146 in 2023. Sorry, ठीक है. Then we have talked about the Geeta Mukherjee Committee. Okay, it's finished. Then simultaneous election. So it has started from 1952 to 1967. Then it has been braked because of some reasons like state legislature has been changed their elections, and in center also you will find dissolution of the Lok Sabha in 1970. Okay. So by this we can see this. Then there is some reports which are just saying there should be simultaneous elections. They are in the favor of the simultaneous election. For example, Law Commission 170 report in 1999. Then Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances and Law Justice 79 report. The Niti Aayog discussion paper 2017. Then Law Commission draft 2018. ठीक है. So these are saying there should be simultaneous election. Then some articles like need for the amendment multiple constitution provision. If they will just make simultaneous election, there will be need to amend some kind of articles like Article 83, 172, 174, 356. Okay. It is related to the election and by-election and no confidence motion, because when no confidence motion happens, then the election process of some states just differ from other states, and center also in some conditions. Okay. Next thing, artificial intelligence and elections. So it is related to the how they can use artificial intelligence in their elections. Okay. For making propaganda, some kind of things. Then personality rights. So the main thing of personality rights in the eyes of free is Trademarks Act 1999. Trademarks Act came in 1999, and then Copyright Act in 1957. Then Article 21 of Constitution talks about the right to privacy. In Kuthuswamy case 2018 also they have talked about the right to privacy. Okay. Then there is a Emblem and Names Prevention Improper Use Act 1950. ठीक है. Then defamation suit
in like if any person will use image, voice and any other picture or any other things of a person without their permission, that will be taken as the defamation cases if they will try to defame that. Okay, then judicial interpretation, this could also come in our paper. Okay, for Titan Industry vs Rajkumar Jewelers case 2012, Deepa Jaykumari vs AL Vijay case 2019, Shakshi Malik vs Venkateshwar Creator PV Limited 2021, Arun Jaitley Network Solution Private Limited and केस 2011. ठीक है, देन यहाँ पे कुछ कन्वेंशंस हैं. देयर आर सम कन्वेंशंस रिलेटेड टू इंटरनेशनल लॉज. ठीक है, रोम कन्वेंशन 1961. सो इन 1961 देयर हैव बीन केम रोम कन्वेंशन. ठीक है, इट प्रोटेक्ट्स परफॉर्मर्स राइट, फोनोग्राफ प्रोडक्शन राइट एंड प्रोड्यूसिंग राइट्स. देन ट्रिप्स एग्रीमेंट 1994, इट सिक्योर्स सर्टेन राइट्स टू द फोनोग्राम प्रोड्यूसर लाइव परफॉर्मेंस एंड ब्रॉडकास्ट राइट्स. देन वीपो, परफॉर्मेंस एंड फोनोग्राफी ट्रीटी. ठीक है, so there are 3 international convention also related to the personal rights. For example, the Rome Convention 1961, then TRIPS agreement 1994, then WIPO performance phonography. ठीक है, next thing is Secretariat of the Parliament. This is also important, very important, this could come in the prelims. ठीक है, तो functions क्या हैं? Servicing various parliamentary committee, Secretary General's aid and advice and presiding officers, prepare research and reference material and write out various publications, prepare and publish a record of the day-to-day proceedings of the House, Secretariat assistance for effective functioning of the House of the Parliament, payment of a salary and other allowances. ठीक है, so these are the functions of the Parliamentary Secretariat. Then Secretariat of the Parliament. Article 98, each House of the Parliament shall have separate Secretariat staff. ठीक है, they will have separate Secretariat staff according to 98 article. Okay, then it also allows creation of post common to both houses of parliament, this article. ठीक है, then article 187 makes similar provision. Secretariat for the state legislature. Council of State, Rajya Sabha and House of Free People came into existence in 1952. ये तो पता ही होगा. The Secretariat of the House of the People continue to be called as the Parliament Secretariat, and new Secretariat called Council of State Secretariat was set up for the Rajya Sabha. ठीक है, तो जो लोकसभा का सेक्रेटरीट है वो कहा जाएगा पार्लियामेंट सेक्रेटरीट, एंड द पर्सन हु विल बी राज्यसभा सेक्रेटरीट विल बी कॉल्ड काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट. ठीक है, देन नेम ऑफ टू सेक्रेटरीट वर चेंज इन 1954, राज्यसभा सेक्रेटरीट एंड लोकसभा सेक्रेटरीट. ठीक है, तो यहाँ पे जो नेम है वो पहले क्या थे, पार्लियामेंट सेक्रेटरीट एंड काउंसिल ऑफ स्टेट सेक्रेटरीट. अब क्या हो गया, राज्यसभा सेक्रेटरीट और लोकसभा सेक्रेटरीट. 1954 में इसका नाम चेंज कर दिया गया. ओके, दिस कुड ऑल्सो कम. राज्यसभा सेक्रेटरीट, तो इसमें क्या होगा, चेयरमैन vested administrative control over the secretariat, administrative head, secretary of general, recruitment on condition of service governed by the Rajya Sabha secretariat, recruitment and condition of service rule 957 promulgated by the president in consultation with chairman similar to Lok Sabha. ठीक है, other key information, secretariat of both house has been divided into 10 services in function basis like legislative, executive and administrative service, verbatim report service etc. Speaker and chairman can create new posts. ठीक है, however for post in class 1 and class 2 prior consultation with the union minister of finance is mandatory. Secretary general of both the house hold rank equivalent to that of the cabinet secretary. ठीक है, तो कैबिनेट सेक्रेटरी की तरह जो है सेक्रेटरी जनरल पोस्ट रखेगा. however in the table of precedence cabinet secretary is placed 11th position. ठीक है, लिमिटेशन क्या है, एब्सेंस ऑफ लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क, लैक ऑफ ऑटोनॉमी, लैक ऑफ इंडिपेंडेंट कैडर एक्सेट्रा. ठीक है, लिमिटेशन है इनकी. देन 108 माइग्रेट्स फ्रॉम पाकिस्तान अवार्डेड सिटीजनशिप इन गुजरात. ठीक है, सो देयर इज रजिस्ट्रेशन ऑफ सिटीजन ऑफ इंडिया एंड ग्रांट सर्टिफिकेट ऑफ नेचुरलाइजेशन अंडर सेक्शन 5 and 6 ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 1955 रिस्पेक्टिवली. तो 1955 एक्ट के सिटीजनशिप एक्ट के अंतर्गत जो कुछ लोग थे उनको सिटीजनशिप मिल गई. जो सिटीजनशिप है ये एक्वायर हो सकती है फॉरेनर को, इलीगल इमिग्रेंट को नहीं. ठीक है, कोई ऑर्डिनरी इंसिडेंट
इंसिडेंट इन इंडिया फॉर 12 ईयर्स, तो लगभग 12 साल से रह रहा हूँ इंडिया में। आर्टिकल 11 ग्रांट्स पार्लियामेंट द अथॉरिटी टू मेक द प्रोविजन रिगार्डिंग द एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप। तो जो एक्विजिशन एंड टर्मिनेशन सिटीजनशिप की वो सिर्फ पार्लियामेंट दे सकता है, कोई और नहीं। ओके। देन डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द लॉ मेकर। तो यहाँ पे क्या होगा कि कर्नाटका हाई कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। तो उसमें मेन चीज़ क्या देखने की हुई कि RPI एक्ट 1951, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 क्या बोलता है कि अगर कोई मेंबर है, पहले क्या था 8(4) था सेक्शन, उसमें तीन महीने का लगभग बैरियर प्रोवाइड किया गया था कि अगर किसी पे क्रिमिनल चार्ज लगता है 2 साल या उससे ज़्यादा ईयर्स की जेल के लिए, तो इन जो पार्लियामेंट्री पर्सन है, MLA है, वो फिर मतलब रिव्यू के लिए डाल सकता है, अपील कर सकता है। बट नाउ 8(4) हैज़ बिन डिमोलिश्ड इन आई थिंक 2013 और 19। So if a person just go for 2 or more year criminal cases, they have debate to contest election for 6 years after their jail term. Then Article 102 and 191 talks about disqualification of a member of parliament and member of the legislative assembly of respectively। ठीक है, तो 102 है वो पार्लियामेंट के बारे में बात करता है, 191 जो है वो बात करता है जो स्टेट की असेंबलीज हैं। ठीक है। The ground here including holding an office of profit, being of unsound mind or insolvent or not having valid citizenship। तो यहाँ पे कुछ ग्राउंड्स हैं अकॉर्डिंग टू 1951 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। ठीक है, उसके अंतर्गत जैसे कि अनसाउंड माइंड हो गया एंड इंसॉल्वेंट और नॉट हैविंग वैलिड सिटीजनशिप, दे कुड बी डिस्क्वालीफाइड फ्रॉम देयर पोजीशन। ठीक है। देन पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन्स। So when chairperson of Rajya Sabha and vice chairperson both are not available, then there will be a panel by the chairman of the Rajya Sabha, which will take place when both chairman and vice chairman is not in the place. But this will not take place when the seat is vacant. Okay. देन प्रिजनर रिफॉर्म है, यहाँ पे कुछ प्रिजनर कंडीशन इंफ्रास्ट्रक्चर रिफॉर्म रिपोर्ट आई है, तो उसमें कुछ हाइलाइट्स दी गई हैं लाइक ऑक्यूपेंसी रेट इन प्रिजनर अक्रॉस इंडिया इज़ 130.2। ठीक है, विद 77.1% प्रिजनर्स इन कंट्री बीइंग अंडर ट्रायल। देन अंडर स्टाफ्ड, लगभग 30% प्रिजनर जो है अंडर स्टाफ्ड हैं। देन प्रिजनर डेवलपमेंट फंड यहाँ पे बनाया गया है। ठीक है, उनके लिए यहाँ पे मॉडल प्रिजनर मैनुअल 2016 बनाया गया है एंड मॉडल प्रिजनर करेक्शनल सर्विस एक्ट 2023 बनाया गया है। ठीक है। देन पब्लिक सर्वेंट्स लूज इम्यूनिटी इन pre-2014 करप्शन केसेस। तो यहाँ पे बात की गई है कि रेट्रोस्पेक्टिव जो केसेस हैं वो कितना वैलिड होंगे कितना नहीं। तो जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था सेक्शन 68 के तहत, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट जो था वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल, क्योंकि इसमें चीज़ें बताई गई थी वाइट एब इनिशियो कि अगर कोई चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है तो अपने शुरुआती रूप से ही जो है क्या हो जाएगी, वाइट हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ दी गई थी। तो यहाँ पे एक केस भी था लाइक सुब्रमण्यम स्वामी vs यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये केस था यहाँ पे। देन देर इज़ इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट्स देर इज़ आर्टिकल 21 विच सेज अ पर्सन विल बी पनिश्ड for a crime with the law which has taken place the time of the crime, not after or before the crime। ठीक है, तो जो पर्सन क्राइम करेगा उस टाइम पे जो लॉ होगा उस क्राइम के लिए वही उसे मिलेगा, उसके अलावा नहीं। तो ये रेट्रोस्पेक्टिव नहीं चलेंगी चीज़ें। ठीक है, दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे दिया है 21 आर्टिकल 21 के तहत no person shall be convicted of any offences except for violation of a law forced at time of the commission of the alleged act। ठीक है, तो यहाँ पे दिल्ली पुलिस एस्टैब्लिशमेंट इन्फोर्समेंट एक्ट 1946 में आया था, इनएक्टेड टू इन्वेस्टिगेट केसेस टू ब्राइबरी एंड करप्शन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो ब्राइबरी और करप्शन किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए। और कुछ स्पेशल क्रिमिनल केसेस होते हैं, फॉर एग्जांपल सुशांत सिंह राजपूत हैज़ जस्ट सुसाइड, तो वो चीज़ भी CBI को गई थी। ठीक है, और जो CBI है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, दिस हैज़
take their power from this law. ठीक है, like Delhi Police Special Establishment Act 1946. Okay, so by this we have completed all the articles within 15 minutes. So let's see, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें फिर से देखते हैं. जैसे सनसेट क्लॉज हो गया, पीरियोडिक रोटेशन हो गई, 14% वीमेन इन लोकसभा, 8% वीमेन इन स्टेट असेंबली, पार्लियामेंट्री यूनियन कमेटी जो थी उसने क्या चीज़ें बताई कि मतलब हमारे जो आवर नेबर कंट्रीज हैविंग मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ वीमेन देन अस, जेंडर गैप फोरम, इकोनॉमिक वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 127 रैंक ऑफ अस इन 146 टोटल. ठीक है. देन गीता मुखर्जी कमेटी हैज़ टॉक अबाउट Rajya Sabha and State Councils representation. Then simultaneous election, Article 83, 85, 172, 174 and 356 talk about this. Then we have to just think about election, by-election and no confidence motion also. Logistic and warehouse issues. Then Law Commission, Parliamentary Standing Committee on Personal Public Grievances, Niti Aayog, Law Commission draft. These all talks about that. Okay. Artificial intelligence and elections. So this is not very important. Personal right. So there are Trademarks Act 1999, Copyright Act 1957. Then Article 21 talks about this. Puttaswamy case, Puttaswamy 2018 case. Then emblem and names prevention of improper use 1950. Then trademark law also talks about this. Defamation suit will be charged by the person who will defame any person. Then Titan Industries vs Rajkumar Jewellers case 2012. Deepa Jaykumar AL Vijay case 2019. Sakshi Malik vs Vinesh Kumar Creation then 2011. ठीक है. Secretariat of the Parliament. So here Article 98 talks about this. Secretary staff of this Parliament may by law have any post for them. Article 185 talks about the state. ठीक है. Rajya Sabha और Lok Sabha had taken place in 1952. Then their name was changed in 1992, like Rajya Sabha Secretariat, Lok Sabha Secretariat. Firstly, they were the Council State Secretariat, Parliamentary Secretariat. ठीक है. Then Speaker of Lok Sabha has control over Secretariat. Okay. Then in Rajya Sabha, there is rule of Rajya Sabha Secretariat recruitment and condition 1957. Okay. And in Lok Sabha rule, this is in 1955. Then there are divided into 10 service and function like legislative, executive and administrative services. ठीक है. 10 services हैं यहाँ पे. Then 108 migrants from Pakistan has a debate from there. Article 11 talks about the Parliament is the basic authority to just acquisition and termination of the citizenship of a person. This has been amended in 1955. ठीक है. A person who will be resident around 12 years in India, they will only be able to just take Indian citizenship, and they should not be the illegal immigrant. They should be foreigner only. Then RPA Act talks about if a person is unsound mind, is not having valid citizenship, they will be debarred from their citizenship. Okay, sorry, not citizenship. They will be debarred from contesting election. And Article 191 and 102 102 and 191 talks about this. 102 talks about in Lok Sabha, in Parliament, and 191 talks about the state legislature. Okay. Then panel of vice chairperson, we have talked about when chairperson of Rajya Sabha and vice chairperson of Rajya Sabha is not available, then there will be a panel made by the chairman of the Rajya Sabha who will take position of them. Then prisoner reform, there has been report which talks about there is too much occupation and okay. Then Model Prisoner Manual 2016, Model Prisoner and Correctional Service Act 2023. Then public servants lose immunity in pre-2014 corruption cases. It declares like 6A of the Delhi Police Special Establishment Act will be as seen as the white ab initio, because this just talk about the retrospective condition of an act which is not valid according to the Fundamental Rights 21 article. Okay, so these were the things which we have to just justify, and thank you so much.